मुझे लगा forever कि ever. बचपन से आपका कुछ कनेक्शन रहा होगा आर्मी वालों के साथ, क्योंकि एक्शन तो ऐसे किया आपने बेतोड़, ऐसे लग रहा है कि यू आर बोर्न टू डू दिस। क्या हो रहा था वहां? मैंने मैंने ना I love watching war films. I love watching real story films. तो मैं वो सारी फिल्में देखता रहता था, ब्रैड पिट सर की और लियोनार्डो उनकी, ब्लड डायमंड टाइप्स एंड ऐसी फिल्में, एंड बहुत सारा मैंने वो देखा हुआ है, द वे सोल्जर्स डू, एंड मैंने वहीं से फिर एकदम अपने अंदर का सोल्जर जगाया और एक्टिंग करी फिर, एंड आप सबके सामने रिजल्ट, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो, और आई थिंक आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी फॉर द लव. I have to say that Sanju, in Dil Bechara, I couldn't get over how natural you were. मतलब एक सेकंड के लिए लग नहीं रहा था कि ये कैरेक्टर है, कोई प्ले कर रहा है, क्या हो रहा है. You are such a gifted girl. Bless you and thank Thank you. you. Thank you so much. That's the best compliment ever. That's so sweet. इनफैक्ट गुरु कह रहे थे ना कि आप हर किसी को अपने घर के वाले लगते हो, उसके लिए मैंने आपको संजू भी बुला दिया है, क्योंकि आई एम श्योर आई कॉल्ड यू दैट, है कि नहीं? It's Her Sanju. name is It's Sanj. Sanj. Yeah, Sanj Sanj. is the nickname. But there's My always a name is nickname my actually. nickname is Gurs. Big G. Big G is your nickname. Yeah, you've given me the big cheap nickname. Everybody's calling me Big G from your How comments. cute is that? That's such a cute name. After Big B, there's Big G. There's nobody else. Big G. Oh, वाह, वाह. I have a very strong feeling कि आपने ये मैनिफेस्ट इसलिए करा होगा क्योंकि लॉकडाउन में आपने इतना स्ट्रिक्ट बना रखा है अपने ऊपर. जब हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, Guru was actually following a routine. Guru was getting into fitness. So you have to tell us कि ये आपको लगता है ये कहीं ना कहीं आपने ट्रैक करा ये वीडियो? See, I think time बहुत जरूरी चीज है. आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, अगर आपको टाइम की वैल्यू करनी आ गई, देन यू आर अ विनर. इवन इफ यू अचीव व्हाटएवर यू आर ड्रीमिंग ऑफ और नॉट, अगर आपको टाइम यूटिलाइज करना आता है, देन यू आर अ विनर विनर. इवन इफ दैट्स आप, अगर आपका पार्टी का मन है, आप पार्टी में एंजॉय कर रहे हो उस टाइम को, ये नहीं जाके फोन पे लगे रहो या किसी से बात ही मत करो. आई थिंक उसमें लोग आजकल ना बहक गए हैं, उनको असल में पता नहीं है कहाँ जाके क्या करना है. सो दे रिपीट देयर ओन प्रोसेस. हर जगह जाके दे डू द सेम. वी कांट डू सेम everywhere wherever we go. We have to change according to the people. We have to talk according to the audience. So मेरा क्या होता है, मैं हमेशा टाइम की बहुत कदर करता हूँ, cause time has given me everything. And ये जो लॉकडाउन में भी मैंने टाइम यूटिलाइज करा, I always wanted to be fit. I was fit, but I was very cute fit, but not this fit. 1 second. I have not heard Cute this fit. in my life. Sanjana, just say that again. Cute fit था मैं. Yeah, but You're then adorable, Guru. अभी जो करा है, एंड आई थिंक ये भगवान ही करवाते हैं. उसके बाद मेरे को ये गाना मिला, एंड आई थिंक फॉर अ सोल्जर नीड्स टू बी फिट, एंड मैं वही उसमें दिख रहा हूँ पूरा फिट एंड फैट. और आई थिंक ये प्रोसेस होता है जब आप कुछ कर रहे होते हो. सो ऑल द एनर्जीज, वो सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती हैं, just because you are working hard for something, and those energies comes to you automatically from nowhere. और उनको आपके पास आना ही होता है, क्योंकि आप उस चीज के लिए काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो. और जिसको ये एनर्जीज का समझ आ गया, जिसको ये लाइफ साइकिल समझ आ गया कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, एंड वो होगा ही होगा, चाहे किसी भी तरीके से हो. कईयों के लिए जल्दी हो जाता है, कईयों के लिए बाद में होता है, कईयों के लिए बहुत बड़े लेवल पे होता है, कईयों के लिए छोटे लेवल पे होता है. सो मैं जब भी कुछ ऐसा करता हूँ, whenever I put extra efforts, I know I'm gonna get something. और I think वो efforts ही काम आते हैं लाइफ में. एंड सेम went with this one. मैंने जिम करा, अपने आप को फिट करा, और I got this video, and it's a blessing. I can't say the same for कितना Sanjana. खतरनाक वीडियो है. My brother called me up because उसको मैं कभी भी वीडियो नहीं दिखाता हूँ. I just उसको गाना सुनाता हूँ ऑडियो. वो कहता मेरे को वीडियो ऑडियंस के साथ ही सुननी है. So I was I think somewhere taking flight जब गाना आया था. हाँ, दुबई जाने वाला था तब, अभी हम शो करके आए परसों चौथ.
तो he called me up, he said यार मैं अपने emotions नहीं रोक पाया, because my brother is everything to me and I love him, and he's like यार मेरे को ऐसा लगा that something is missing है ना, and I felt it when he said it, and everybody उसके बाद जिसने वीडियो देखा सबने ये फील करा, मैं जितनी बार वीडियो देखता हूँ I feel the same that something is missing, कुछ गड़बड़ है going on in the video, and I think it's a blessing कि हम कैमरे के ऊपर वो कैप्चर कर पाए जो हमारा दिमाग सोच रहा था, और यही सबसे बड़ा आर्ट है। नहीं तो फिल्म में वीडियो 100 बनती हैं, बट क्यों कुछ चीजों की बात होती हैं, कुछ चीजें स्पेशल होती हैं, क्योंकि आपका दिमाग और आपका आर्ट और आपके भगवान जब इकट्ठे होकर काम करते हैं, उसको कोई चीज नहीं रोक सकती। वो इमोशंस हर एक के दिल तक पहुंचने होते हैं, इवन इफ यू प्रमोट इट और इवन इफ यू डोंट प्रमोट इट। दैट्स हाउ आर्ट इज। आर्ट हैज टू बी, it has to reach all the corners when it is done with all the heart. Sanjana, for you, I don't think I can say कि आपको मेहंदी लगा के शादी करनी थी, for sure. You've got a long journey now. But if I had to ask you कि ये वीडियो आपके लिए एक manifestation है या क्या है, if there is anything, what would that be? Like, क्योंकि इसमें आप भी ऐसे लगे तो कि बहुत टाइम से इसका पार्ट हो, जैसे वो गुरु कह रहे सही है यार, you know, you don't look apart from it. That's what I just realized that as film actors, इतनी प्रेप करते हैं हम और बहुत काम करते हैं किरदार पे उसे बनाने के लिए, like for Kizzy, I spent a year trying to just build her, and but here somehow it was one of those where हम हिमाचल में शूट कर रहे थे और उस माहौल में घुसते ही कुछ something started happening, you know, you suddenly felt like you're telling a very special story, and a 3-minute music video usually doesn't, I at least don't get left with a heavy heart of emotions at the end of a song too often. So it's very refreshing for me because it made me realize that maybe there's going to be some characters which you can just create in the spur of the moment, they just happen. So it's a huge kind of learning, I think, as an actor. But definitely from that energy. Yeah, and that's what, like you said, like mehendi and shadi is nowhere on gonna be on my cards for a long time, but that's the whole point of art, that you tell stories and worlds that aren't your worlds and you tell them convincingly. That's the I want to share with you, जब पहली बार मैं गुरु से मिली थी रेडियो श्री के स्टूडियो विच, it was insane. His smile wouldn't leave him. People were just falling all over the place. Guru hai, everyone wants like a selfie, the typical scenes. And this man is looking untouched. मतलब उसको पड़ी नहीं है. उसको हाँ हम बात कब कर रहे हैं? अब बात कब कर रहे हैं? He is so into like what he was just mentioning a while ago, which is so rare for somebody, I mean, of this generation to have that kind of focus, because you're so, you know, also as an artist, that's what you live for. You live for the appreciation and the love. But he was like, नहीं मैं interview देने आया हूँ. भाई interview कब देना? So I was like, and very charming. मुझे बहुत कम ऐसे लगता है कि in a video the boy's smile is going to be overpowering the girl's smile. But Sanjana, I hope you would not mind. He's got this extremely charismatic childlike है ना? So what was the meeting like? क्या हुआ था? The first time we met was exactly on set right before getting onto camera, and that can be a very nerve-wracking situation because nerve-wracking, spur of a moment. Wow, crafting. क्या हो रहा है ना एकदम? So then this is a trailer of exactly what our equation and bond is. मैं कुछ बोल रही होती हूँ फिर मेरी टांग खींचेगी बीच में क्योंकि इंग्लिश का एक शब्द आ जाता है और फिर but I know we had great fun. I could tell that we just understood each other as people instantly, and it doesn't happen with me too often where I just feel like this person just gets me, you know, and this is just gonna be easy, and that's what it was. Like anything that was on my mind, I was telling him, let's do it like this, let's do it like that. And it was new for me because it was my first music video. It was new for him because he was
not being Guru Randhawa for the first time in that sense. Yeah. So we were Yeah. kind of like, helping each other get going, and You were that's helping what me. was You special. don't need help in acting. You are a great actor. I've learned so much from your expressions. Now, next video you see, I'll copy you. You will see it. Okay, so that there's this sad music video I'm doing. Now you will recognize when I'll particularly वो एक second में I'll copy you and you'll go How crazy. sweet. ये क्या कर रहा है? नहीं ये बहुत सही बोल रहे हैं. मेरे को कभी कभी जैसे रानी मुखर्जी में आमिर खान का कुछ परफॉर्मेंस दिखता था, but it's so rare of an artist to admit that something like that is happening, and look at him, he's just saying it out. He's just This so Yeah, is because him, we yeah. need to learn from each other every second. We need to make sure कि हमें we are adding on to our life, because you never know कौन सी चीज कब जो आप अपने बैक एंड माइंड में रखते हो वो कब फ्रंट पे आ जाए. सो उसके Yeah. लिए वो चीज होगी बैक माइंड पे तो ही फ्रंट पे आएगी ना. सो वी नीड टू पिक गुड स्टफ फ्रॉम एवरीबडी इन द Each वर्ल्ड other, whosoever yeah. we meet, और उसको रख लो अपने दिमाग के पीछे. जब टाइम आएगा वो खुद आपका दिमाग बोलेगा हाँ दिस इज अ टाइम यू नीड टू कॉपी दैट पर्टिकुलर पर्सन राइट नाउ टू बी इन And दैट think of स्पेस. their, yeah. And that's how I've ended up writing High Rated Gabru song. That's I think it touched 1 billion views, but उसके पीछे idea था. I just made a song called Hai ni hai nakra tera ni tan 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 mare. So there was no word, because all the words are used by all the other singers. No, कोई गबरू बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. But I used to watch when I was struggling. I used to watch high rating films on YouTube. I used to type high rating films जिनकी ratings बहुत high हैं. And used to watch all those inspirational movies, and then एकदम word आ गया High Rated Gabru न मारे, and that's it. वो title ऐसा था कि it went crazy everywhere क्योंकि वो back end पे था. Now your two of your acting skills are in my mind now. Whatever you do, no, whatever you do now, I will copy it in my next, and you'll see it. And for me, Aju, for like seeing just Guru be how he just like I'm a slightly kind of, I don't take things too easy, or I'm not able to be easy going sometimes because Yeah. I care about sometimes, Yeah, I don't know. I just, when I see him, I see a passionate and focused person, but he's also so like relaxed at the same time. Yeah, And so there's agree. also things outside of the craft that you pick up from each other, Yeah. which is something that with Guru, like I've really been able to do or wanted to do. There is something, Yeah, Guru, no, वो एक बात है आपकी, वो एक स्माइल नहीं जाती है ना, वो ऐसे लगता है कि मतलब आप मर भी रहे हो तो आप स्माइल नहीं कर रहे होगे, मतलब क्या हाँ, है मतलब What is 18 घंटे हो गए हैं, ठंड हो रही है, थकान हो रही है, पर गुरु की स्माइल ही नहीं जाती है. And I'm just like, something is wrong with me only. क्या है वो यार Guru? No, you know why? Why? Because since the time I've left my village, I've experienced everything in a very smiling way. मैंने कभी भी ये नहीं कहा मेरे पास तब ये नहीं था, सबके पास ये है, सब लोग पार्टी कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा, सबकी गर्लफ्रेंड्स बन गई, मेरी क्यों नहीं बन रही. I was like, okay, let it be. I have different goals in my life, but अगर तो मैं खुश होके उनको अचीव करूंगा, then also time will pass, but memories तो वही रहने वाली हैं. So मैंने तब से सोच लिया था कि I'll always be smiling, and I'm anyways living this life. Even if I won't be this singer, whatever I am today, I'll be a singer performing somewhere, but with a smiling face. I don't care गाना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, but I just love singing. I can't live without it, and I have lived my whole life till date singing, and I think it makes me beautiful inside, and I just love smile. And when I think of everything I've done till date, I smile. मेरे को बहुत मजा आता है सोच के कि कैसे कैसे दिन थे, कैसे कैसे हमने क्या क्या अचीव करा है, और अभी आगे क्या कुछ अचीव करना है अगर भगवान चाहेंगे तो. I think it's a blessing to be on screen. That's the main thing. इतने लोगों में से आप ही को क्यों मौका मिल रहा है? Because you are very special to him, no? It's Guru, what was the not hardest part of holding the gun and doing the action? सबसे tough क्या था? सबसे tough
see मेरा क्या है, everything in my life is plus. So there's nothing is tough. You know what I feel from day one? Ki if some other human being has done something, I can also do it. So there's nothing is tough for me. अगर तो हाँ कुछ नया ही है, कुछ जैसे गाने हम बनाते हैं, the style I have, nobody has done it, that's my art. But if I need to copy somebody or if I need to do something which soldiers तो पहले भी बड़े बने हैं, मैंने कौन सा कोई तीर मार दिया, पहली बार थोड़ा soldier बनाया कोई. So if somebody else has done it, I'm a human being, I have eyes, I have hands, legs, I have uniform, I have all the resources to look like a soldier, to feel like a soldier, because I have felt it being an Indian, है ना? So there's nothing is tough, I think. कोई ऐसी मूवीज मन में आती हैं बचपन से जो देखी हैं, आपको याद आ रही थी जब आप कर रहे थे? Border, the first film I watched was Border. Cinema में हमने देखी थी Border. रोज सिनेमा था बटाला हमारे शहर में, and I came back home telling everybody कि इतना बड़ा फोन दिख रहा है, उसमें टेलीफोन इतना बड़ा दिख रहा है सिनेमा में. And yeah, those films, and then many soldier based films I've seen. अभी भी whenever I watch TV, मेरा जो सिनेमा देखने का स्टाइल है, it's very different, nobody knows about it, but I watch all sensible films जिनसे मैं उठूं और कुछ सीख के उठूं, and ताकि मैं अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बना सकूं from the cinema, because cinema tells you how to live your life actually. सिनेमा के बिना बहुत सारी चीजें जो आप नहीं समझ सकते, and you need to make sure कि आप जो सिनेमा देख रहे हो that makes sense. And उसी के चक्कर में I think I've done so much in my life. I've watched so many films, मतलब पता नहीं कौन से देश की, कहाँ के देश की, कौन से लैंग्वेज में, just to make sure कि I know what all things people can do in life, and cinema tells you that. And I love everybody who are doing cinema. I just respect them so much. But I'm glad that you all the raised the actors. respect for all our army people. Sanjana, what about you? What is your brush with army people, or what do you want to tell people? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब भी मुझे बम्बई के रास्तों में भी कभी एक कोई गाड़ी में दिख जाते हैं तो I want to salute to them. और ये एक बात ना 100%. हम बाय करते थे गाड़ी स्कूटर में से. वही तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जबान से सुन के बहुत लोग इंस्पिरेशन लेंगे. So I'd love to know your feelings for the armed forces people. You know, I've grown up बहुत दोस्तों के fathers and have been in the forces, and I've seen their lives of sacrifice and being away from their fathers, and being worried and just having their heart in their mouth all the time, but also being so proud. And I used to see it, but that's why in Mehndi Wale Haath, when I had to play this particular part where we had to show these two people who have something so beautiful, but they're letting go of it for a bigger reason for our country. Just it's the most, I think it's the grandest sacrifice that they make, and like respect is beyond the sky for them. I mean, what they do for us is we won't be able to live this life feeling secure in this country without them. So biggest salute to them. And I hope we can keep making art to show that we really do appreciate and value everything they do. You know? And we owe them so much. Thank you guys. So it's been so much fun. There's so much more that I'd love to talk about, but I'm hoping the lockdown's going to be done. We're all got that sui of the COVID and we can meet. Yes. Yeah. Thank you so much. Thank you guys. Well, and thank you Anji. Guru Thank for you, bringing sir. such beautiful artists. हम miss कर रहे थे संजना को, तो I'm happy कि इनको हम लोग ने देखा. इससे पहले इनकी अगली picture release हुई है ना. She'll be, I think, in coming few years, she gonna make sure people look at cinema in a different way, because she's very serious about it, and we look forward to it, Sanjana. You're gonna Wow. make us all proud. Beautiful. Thank you, both of you. Thank Lots you, of love. Ashna. Bye, Bye. Arju. Thank you. Bye. You too. Radio City.